Recording wala face nahi. Okay. Good afternoon, everyone. Right? Good afternoon. Sorry for saying you once again, and make you saying twice this good afternoon. Okay, fine. So first of all, myself is Piyush Kumar, okay, and we are having a session on history optional today. And there is a there is a topic on what I'll prefer to talk about basically. And what is the topic? The topic is very simply how to reduce the vastness or minimize the vastness of the subject. I think many of you either have decided to take history as an optional paper and many must be still struggling with this phase key whether you have to go for this history optional or not, because there are so many rumors or there were so many misconceptions, I must say. As of course I have been teaching history, I have been understanding the subject for for last couple of years, I must say. ज़्यादा नहीं, हिस्ट्री पढ़ते हुए 22-23 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं, तो इतने साल हो गए पढ़ते हुए मुझे. मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ यार. So unfortunate that some of the people understand कि just by reading couple of books they believe that they have learned history, but this subject is actually so intense that it actually does require time. But it does not mean that for a UPSC also you do require this much information. But yes, understanding is very important, and in fact in this particular session these are couple of things we are going to highlight. When it comes to the subject, right? Like many of you, as I told you, that you are still struggling with this question whether you should go for this subject or not. And there are few reasons because of what you normally hesitate. I have noticed that there were many students, they have been liking the subject, but there are a couple of reasons because of what they are not selecting it. एक तो ठीक है, उनको लगता है कि ये subject trend में नहीं है, ठीक है. अब ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है ये बड़ा मुश्किल सवाल है. अब सवाल है कोई फर्स्ट रैंक लेके आ गया तो शायद दस्तूर बदल जाए, लोग सेलेक्ट करने लगे सब्जेक्ट को कि नहीं कोई रैंक 1 लेके आ सकता है, तो मेरे हिसाब से बहुत आसानी से लोग अंडर 100 तो आ ही सकते हैं. दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट. बट इवन दो इफ आई से कि हिस्ट्री, as far as history is concerned, good number of selections are being done every year. Like every year I think more than 50, 55, 60 students are getting selected with this paper, except 1 year. I do accept, ठीक है, एक साल जो है वो कहते हैं ना assassination जिसको कहते हैं उस सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत हुआ था. Otherwise this subject kept on performing good, average I must say, average always. But there are some other problems also apart from this result part. The another problem is that there were many people, those who believe that the subject is very vast, okay? And in fact this is the main idea what we are going to discuss in today's class or today's session. Yes, come. In today's session, that this subject is considered very vast, right? Now what is the meaning of vast? Let us try to understand it. So when I say the subject is considered to be very vast, what is the meaning of this vastness of the subject? There are two reasons. What I understand, as I told you that I have really given good years of mine to this subject. So let us try to understand why this subject is considered very vast. There are two reasons because of what it is considered vast. One, the syllabus. Pages खत्म ही नहीं होते यार, है ना? अब पलटे जाओ, लगता है कि अब पेपर 1 खत्म हो जाएगा, अब पेपर 1 खत्म हो जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा है सिलेबस, ठीक है. एक रीज़न तो ये है. दूसरा रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम वास्ट कहते हैं? लाइक मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड, बिलीव दैट इट्स वेरी फैक्चुअल, ठीक है. And you believe कि there are n number of facts are there and you need to cram or you need to mug up all these facts. और अगर आपने ये कर लिया है तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. This is also, and I must prefer to say that this is a misconception, ठीक है. Why misconception? Because yes, it's actually not required. So one by one, we'll just try to deal with both these two aspects, that whether it's really having a kind of huge syllabus or not. For that, we have to see couple of things. Let's say, first I had been discussing about the vastness of the subject, है ना? So let's talk about, let's see the syllabus. I think it's the syllabus. Yes, this is the history syllabus that has been given, right? This is downloaded from the UPSC itself, and that's the syllabus. Let's enlarge it a little bit. Okay, I think you can see. Why am I keeping the syllabus here? Because if you'll see the syllabus, you can understand one thing, that undoubtedly more number of pages are there. Undoubtedly more number of pages are there in this syllabus as compared to other optional papers. But at the same time, you must note down one thing. Let's say if they needed to cover one topic, sources, sorry. If they, you needed to cover one topic, in that case you could have they could have given sources, ठीक है. वो सिर्फ इतना लिख सकते थे कि you need to cover sources, ठीक है, and their things will be done. But instead of writing only sources, what they are writing? Archaeological sources, and within this archaeological sources,
एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, मॉन्यूमेंट्स. कुछ बचा इस पे? Is there something left? Every dimension that could be there for archaeology or could be sources, like could be for archaeological sources, they are given here. And like it's not necessary that whatever has been given here we need to collect it. अगर आपको लगता है कि सब कुछ जो दे रखा है हमें सब कुछ के बारे में पढ़ना है, it's not important, it's not really necessary. Then it comes to literary sources, indigenous, then primary, secondary, poetry, scientific literature in regional languages, religious literature. Now they have given everything. Okay? Then it comes to foreign accounts, the Greek, Chinese, Arab. Okay? So they have included every part, what to say. Normally when you read or you prepare for UPSC, there's one thing which has been very frequently discussed, that's called as decoding of the syllabus. है ना? When you see the syllabus of general studies, specifically I find it true for general studies, but that's very much true for the optional also. There are a couple of optional papers where you can find that the decoding of the syllabus is very much required, and that's why many coaching institutions are publishing the decoded syllabus. या फिर वो बोलते हैं कि आप आइए हम syllabus decode करके देंगे. मैंने भी कोशिश की कि decode करें, फिर syllabus उठाया, देखा कि क्या decode करें, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया because it's already decoded. So everything has been given here. Like they could have any topic that you can select. In fact, I must say any topic that you can you can select, okay, and it's not working. Anyways, we can see it from here also, okay. So let's say prehistory and proto-history. Everything has been given here. Indus Valley civilization, every important dimensions. Origin, questions are coming from origin. Date, though it's not very important, but it can be included somewhere. Extent, characteristics, decline. And then survival, significance, art and architecture. So each and every dimensions have been given here. And that's why I used to say, okay, actually it's not required that you decode the syllabus, everything has been given here. So when the syllabus has been given in such a decoded manner, in that case, undoubtedly the syllabus will be slightly bigger. थोड़ा बड़ा होना फिर लाजमी है. तो इस वजह से syllabus हमें बड़ा लगता है. But syllabus actually अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा syllabus है नहीं इसका. That's one dimension. So when it comes to syllabus, right, this is one thing that you need to keep in mind. Now the point is that now how to actually deal with this. ठीक है? How to deal with this particular concept. Just a second. Okay. Okay. Got it. Thank you. Right. The second part is factual. Okay. Now when it comes to factual, now it is another major misunderstanding with the subject, that you believe that this subject is very factual. And in fact, I must tell you that there were many books that you guys are reading that's really factual, because when you read the subject, you can find there are so many dates. Okay. So the factual, it can be discussed with respect to dates, okay, with respect to names. और ये सब्जेक्ट इतना बदनाम है कि द मोमेंट यू सेड समबडी कि आई स्टडी हिस्ट्री, ठीक है, तो पहला सवाल क्या आएगा? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, औरंगजेब कब मरा था? ठीक है, बड़े पॉपुलर से सवाल है. और सवाल कैसे होते हैं? हमेशा ये आपसे ये नहीं पूछेगा कोई कि जो है यार स्टेट सिस्टम समझते हो? हैज एनीबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन वेदर यू रियली अंडरस्टैंड द स्टेट सिस्टम? इफ यू अंडरस्टैंड द सिस्टम, हाउ डिड इट इवॉल्व? ठीक है, if you talk about any institution, let's say any institution, let's say social institution, when you talk about caste, do you understand the meaning of caste? How did it emerge? What is the real meaning or implication of caste? Nobody is asking these kind of questions. So basically what happens whenever it comes to the vastness of the subject, this perception for the subject is making it very vast. But why it's vast? Because people believe that dates and names are the most important thing, or which is the main component of the subject. So if we'll keep on seeing the subjects in this way, in that case, undoubtedly you'll keep on feeling that the subject is really vast. But I'm telling you that actually it's not required. मैं अपने स्टूडेंट से साफ शब्दों में ये कहता हूँ कि अगर आपको डेट्स आती भी हैं, अवॉइड राइटिंग. क्यों कहता हूँ? क्योंकि समटाइम्स इन द एग्जामिनेशन हॉल यू आर अंडर इमेंस प्रेशर. ठीक है, आप जब बैटल ऑफ पलासी लिख रहे हैं तो 1757 की जगह बहुत आसानी से होता है 1857 लिख दिया आपने. दिस इज अ नॉर्मल मिस्टेक दैट यू हैव बीन डूइंग. Now the evaluator also knows that you know that Battle of Plassey took place in 1757, but what you have written 1857. So theoretically it's wrong. You do not know that in which year the Battle of Plassey took place.
मैं कहता हूँ अवॉइड करो, तो फिर कैसे लिखना है? या राइट इन सेंचुरीज, राइट इन डेकेड्स, ठीक है, 19th century, 14th century. Let's say if you are writing somewhere in ancient, writing any answer in ancient, in that case you'll be writing in centuries. If you're attempting any question in medieval, max to max you can say in decades, second decade, third decade, ठीक है, the first like quarter, second quarter, third quarter. This is the best way. And in fact, you read any classical book on history, you can find that instead of mentioning the accurate date, they have been always mentioning the date in this way, decade, quarters, ठीक है, और the centuries. This is how they do mention. अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो ठीक है. So that's why it's not factual at all. Names are not very important the way it is perceived. Sometimes you have to refer the names, but if you think that by referring the name you are getting more marks, at least in paper 1 it's not clear. It's not correct. To some extent in paper 2 it may be correct, because in paper 2 the evaluation is very different, the expectations are very different. तो paper 2 में थोड़ी अलग natures जो है वो expected है. But then it comes to the vastness, as I told you, that syllabus, it's a misconception. The factual part, this is also a misconception. Then in that case, how to understand the subject, that's also, or how to minimize the vastness. This too we have understood, okay, we are not supposed to do. But still the syllabus is there, and I am telling you that it can be also minimized. कैसे करें इसको? इसके कुछ तरीके हो सकते हैं मिनिमाइज करने के, हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो मैं कहूँगा कि whenever you have been preparing for this subject, like for minimizing the vastness of the subject, the things that you are supposed to do, that go for the syllabus. And PY keys, synchronization. That's very important. I don't know how many of you are really doing it. And that's why I always publish, always give my students these kind of papers, these kind of papers, let me tell you, let me show you, such as, this kind of paper, okay? Why this, what exactly we do in this paper, right? We always go for this kind of division of the syllabus and the questions, okay? The moment you'll start doing it, and in fact in this particular paper, what probably will be given, okay, you can find that topic wise we have kept the questions from different themes, and if you'll see it, right, in that case you all will be able to understand कि okay, these are the topics from where the questions are being asked. So that's very important. Let's say if it is archaeological sources, so there are a couple of questions which are historiography based question, right? These are historiography based question. Then these are archaeological sources, literary sources, and you can actually go for a kind of comparison also, that what sources have been preferred while asking the questions. Foreign accounts पे कितने questions आए, ठीक है? इस तरीके से अगर आप synchronize करते हैं, तो you will be able to somehow minimize the syllabus first. कि it's not necessary whatever has been given in the syllabus you need to cover it. तो सबसे पहले तो इस परसेप्शन से बाहर आ जाइए कि जो भी सिलेबस में दिया है वो कवर करना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ कवर करते रहेंगे, आई एम टेलिंग यू दैट दैट्स practically not possible, because this syllabus is undoubtedly, this is also huge, ठीक है? And if you decode any subject syllabus, you will find that ultimately they are huge, and but if you are changing your method, you are doing it in a different way, in that case definitely some of the parts would be ignored, right? So first thing, that you just go for these kind of synchronization, and once you have been doing these kind of synchronization, in that case definitely you'll be getting help, right? Then I told you identifying important areas, okay? That's very important, that whether you are able to do it in your syllabus or not. Now the point is that how to identify the key areas, okay? Or how to identify the important topics. कैसे करेंगे आप आइडेंटिफिकेशन कि ये इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है? One thing I have already discussed. Once you synchronize the syllabus with the previous year question papers, specifically you have to do it for last 10 years only. आप सिर्फ पिछले 10 सालों के लिए करिए और आपको समझ में आएगा कि कुछ टॉपिक्स जो है अब रेलेवेंट नहीं है. अब मैंने अभी आपको जस्ट आई शो यू द सोर्स, द सिलेबस ऑफ द सोर्सेज. अच्छा, आई हैव डिलीट, अच्छा इट्स देयर, ठीक है. नाउ एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, मॉन्यूमेंट्स, इसमें कभी क्वेश्चन नहीं आता है इस पार्ट में. लाइक यू वोंट फाइंड द क्वेश्चंस एवर फ्रॉम इन दिस पार्ट यू फाइंड द क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम हियर एंड हियर, दैट्स इट. मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी नहीं पूछते, तो ठीक है यार, हमें जाना ही नहीं उस पर. अगर नहीं पूछते तो आज तक नहीं पूछा उन्होंने, दे हैव नेवर आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन ऑन दैट, वी डोंट नीड टू कवर इट, ठीक है? ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग समवेयर इफ यू गॉट दैट, दैट्स परफेक्टली इनफ.
Literary sources. The first thing they have written primary and secondary, right? Whether have you seen any question on the secondary sources as such? Secondary literary sources? आप पढ़ते हैं पर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पाएगा, आपसे कभी नहीं पूछेगा इवैल्यूएट और एग्जामिन द बुक ऑफ बिपिन चंद्र, द इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, और एग्जामिन द बुक ऑफ उपेंद्र सिंह. They won't ask this kind of questions. So here we have to focus only on the primary sources, like primary literary sources which are being used by us for history writing. And that's how every part you can identify these important areas. Let's say prehistory and proto-history. Like when it comes to prehistory and proto-history, you all must be realizing one thing, that this has covered the greater part of human history. पिछले 5000 साल की हिस्ट्री हम पूरा एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पढ़ने में निकाल देते, और प्री हिस्ट्री हम शायद एक क्लास या 2 क्लास में ख़त्म कर देते या एक चैप्टर में ख़त्म कर देते. बट ठीक है ना यार, कोई प्री हिस्ट्री इतनी बड़ी टॉपिक है कि आप पूरी रिसर्च कर सकते हैं प्री हिस्ट्री के ऊपर. बट सवाल है कि यूपीएससी में कितना रेलेवेंट है. 2-3 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है प्री हिस्ट्री से. एंड व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? मेसोलिथिक पेंटिंग, one topic. What is the next one? Neolithic transition, second topic. And then it comes to, after Neolithic transition, we can say Neolithic settlements. That's it, it got over. So these are the 3 topics from where the possibility of question is there. And I'm telling you that the researchers are so less in this particular part that there is no possibility of greater number of questions. So you have to understand कि okay, what are the possibility of the questions, and according to that only you need to prepare. अगर आप सब कुछ पढ़ रहे हैं कि सिलेबस में दिया हुआ है तो मुझे पढ़ना है, तो फिर यूपीएससी फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा, 4-5 साल 6 साल कुछ ऐसा करके लगेगा, ठीक है. और आजकल यूपीएससी कैसा है, 1.5 साल, ठीक है. हमारे टाइम पे होता था कि घर से बोल के चले यूपीएससी करने जाना है, फिर 5 साल तक तो है, 3 साल तक कोई रिजल्ट नहीं पूछते थे कि क्या है रिजल्ट आया. 3 साल के बाद पड़ोसी पूछते प्री दिया क्या, ठीक है, नहीं अगले साल देंगे, अभी तैयारी चल रही है. अभी यार उतना वक्त नहीं है यूपीएससी क्लियर करने के लिए, बिकॉज द पीपल दोज हु हैव बीन क्लियरिंग यूपीएससी इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, हर साल बढ़ रहा है. तो हमारे टाइम पे ये क्वेश्चन ही नहीं था कि कोई पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर भी सकता है. नोबडी वाज आस्किंग अरे ये क्लियर अभी दिस इज अ काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, कि somebody has cleared it in the first time. It's all about the approach. If you are having the right approach towards anything, either general studies or essay or optional, like you are cracking it in the first time only. So that's why these kind of analysis are very much required. Okay. So when it comes to these analysis, I must say, if you have been doing it properly, in that case, if you have been doing it properly, in that case, you'll be able to do a proper analysis. Okay. So I was in this part, identify important topic. So one identification could be done on this ground, ki questions are coming from this part or not coming. But apart from that also, there are a couple of things like that can really enlighten you in this particular dimension. Now you can find that there are some topics, they seem to be important, but they are not very relevant anymore. I don't know whether you understand the subject or not, what kind of background you do have, I don't have any idea. बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर पहले बड़े क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आते हैं. एग्जाम्पल, गण संघर्ष के ऊपर पहले बहुत क्वेश्चंस पूछते थे. आप 2005 से पहले अगर पेपर उठाएंगे तो you'll find good number of questions being asked from the गण संघर्ष. Now these many questions are not coming from गण संघर्ष. Have you ever thought why the questions are not being asked so frequently the way it's being asked earlier? Or else चोला का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते थे. मतलब ये तय था कि अगर इस साल इन लोगों ने नहीं पूछा तो अगले साल पक्का पूछेंगे ये लोग, ये बात 100% तय था. अब नहीं याद, अभी कभी 5-6 साल में एक बार उठा के पूछते हैं. इट हैज बिकम इररिलेवेंट बिकॉज व्हाट अंडरस्टैंडिंग वी हैड, द हिस्टोरियंस हैड फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोला समवेयर लेट्स से 10 years बैक और 20 years बैक, नाउ इट्स नॉट देयर. अभी हम मानते हैं कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं था, ठीक है. Now this is conclusion. Earlier it was not conclusion. There was a debate whether it was there or not. Now there is a conclusion. When it comes to Gana Sanghas, now we accept कि now they were not accepted as Gana Sanghas. अभी पहले का आइडिया बहुत बदल गया, पहले के हिस्टोरिकल रिसर्चेस जो है बहुत चेंज हो गए. तो देयर आर सम टॉपिक्स दे हैव ऑलरेडी बिकम इररिलेवेंट. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट. एंड द सेकंड थिंग, देयर आर सम न्यू टॉपिक्स दे हैव बिकम मोर रेलेवेंट दीज डेज, such as our understanding for urbanization. Our understanding for urbanization has actually gone through a kind of change or the transformation. आज से 20 साल पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग अर्बनाइजेशन के लिए थी वो बहुत लिमिटेड थी. अभी अर्बनाइजेशन को लेके हमारी समझ बहुत बेहतर हो गई है. तो बेहतर हो गई इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है. और ऑप्शनल में छोड़िए, जीएस में क्वेश्चन पूछते हो,
अर्बनाइजेशन पे मुझे याद है 2 साल उन लोगों ने बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे थे. तो प्लीज आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड some such kind of topics, in that case you can really focus on them. ठीक है. And towards the end of your preparation, when the means are about to come, I must tell you that actually you have to go for these kind of things. ठीक है. You cannot revise the whole syllabus in last couple of days or let's say a couple of months also. So if you have really identified these things, in that case your preparation is really getting a good shape towards the end, and of course your performance will be better. So that's one thing that you need to keep in mind. The third thing that people always believe ki, is there any concept also in the subject? लोगों को लगता है कि कुछ थीम्स है, उसके ऊपर कुछ किताबों में लिखा हुआ है, वो पढ़ना है और जाके प्रोड्यूस कर देना है, लिख देना है. I think this is a most important perception, or the most let's say popular perception among the students. कि their content is written in the books, I have to read it and I have to produce it. ठीक है. There are many people I have met with them. ठीक है. They are reading just notes. उनको लगता है कि notes पढ़ लेंगे और notes जाके हम वो लिख देंगे. अगर इतना आसान होता, ठीक है, अगर ये इतना ही आसान होता कि आप नोट से वो चीज़ें डेवलप कर सकते, तो फिर सिर्फ नोट्स बिक रहे होते, किताबें कभी नहीं बिकती. बट किताबें बिकती है. द काइंड ऑफ कंसेप्ट दैट यू कैन फाइंड इन वन बुक, and it's yes, this is true that from one book you cannot collect that much concept. ठीक है. You need to read different books to collect this concept, but mind you, concepts are very important. खासकर when it comes to paper 1, I must tell you the concepts are very important. In paper 1 they have been asking very innovative questions. ठीक है. पेपर 1 में इनोवेटिव क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं क्योंकि पेपर 1 में स्कोप है उनके पास इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछने के लिए. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड हिंदी. आई हैव बीन वेरी फ्रिक्वेंटली यूजिंग हिंदी. इट्स ऑल ओके विद दैट. एनीबॉडी हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? ऐसा कोई नहीं है. अच्छा, okay, fine. So concepts, so you focus on the concepts, that's very important. ठीक है. And in fact everything will be conceptual. Specifically in paper 1 I believe everything is mostly conceptual. And whenever you talk about, let's say, I had been giving you giving you the example, let's say when you talk about urbanization, it's a concept. When you talk about state formation, that's a concept. So there might be many such there might be many such concepts, and if you have been following all these concepts properly, in that case our understanding will be far better, and in that case any innovative question which is coming will be able to deal with these questions. Otherwise क्या होगा, जब हम टॉपिक या थीम बेस पढ़ के जाते हैं तो हमें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि ये पूछ कैसे रहे. और जिस तरीके से द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे हैव बीन फ्रेमिंग दीज डेज ना, दे आर लिंकिंग द वर्णाश्रमा धर्मा विद पेट्रियार्की, and they are asking questions. Now if you have read varnashrama dharma separately and patriarchy separately, you won't be able to mix them. और अगर आपने conceptually समझा है कि what was the varnashrama dharma and then how come it was it was achieved through patriarchy, you all will be able to write answers of these kind of questions. So that's why you try to develop the concepts. That's very important. And if you're not able to develop the concepts properly, in that case definitely the problems will be faced by you. So that's why we can say that these three things in general you need to keep in mind. Then it comes to, there are some specific suggestions. So let's say for paper 1, अच्छा रिंगटोन, मुझे भी पास करिएगा. ठीक है. Okay, it comes to paper 1. Now paper 1 is slightly different in nature. In paper 1 you can find that you have been reading a history of longer period. ठीक है. That history covers from IVC. Let's leave prehistory. IVC to बहुत सारे वो है अभी भी प्रॉब्लम्स. अर्ली मेडिवल पीरियड को हम कहाँ रखते हैं एग्जैक्टली, वी आर नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट, बिकॉज सम हिस्टोरियंस दे हैव बीन, दोज हु आर बिलीविंग इन द फ्यूडलिज्म थियरी, दे बिलीव कि अर्ली मेडिवल इज पार्ट ऑफ मेडिवल. Those who are believing that no, there was no feudalism in India, in that case they believe early medieval is part of ancient, right? So there is a misconception. But still the question till 10th century is coming in ancient, and after that from 10th century to 18th century the questions are coming in medieval. Cholas and all, they were included in medieval basically. So there is a longer history that you have been covering in this part. And since the history is longer, and that's why what is happening here, the event based questions are not being asked, right? The event based questions not being asked. थोड़ा इस बोर्ड में लिखने की आदत कम है, मेरा हाथ उसी में ज़्यादा चलता है. ठीक है. Event based questions are not being asked. Like the way you find the questions in paper 2, they are event based questions. In paper 1 these kind of questions are not being asked, and that's why in paper 1 what happens basically,
the questions are somehow covering a longer period, and in fact you can find these kind of questions also from 300 BC to 300 CE. Like this is how the periods have been given, and you have to ask about any particular theme with respect to the period, and that's how event based questions are not there. And that's why in paper 1 what you are supposed to do in paper 1, try to understand or try to focus more on concepts rather than those events. Chandragupta Maurya ne kya kiya, Asoka ne kya kiya. These are the things which are not very important for us. Always the chronological understanding, right, with respect to certain themes. Now that's very important, that when it actually comes to understanding or developing the concepts, so always divide the society into couple of parts, and that can really help you to understand it in a better way. So always divide it into political system, right, or political domain, economic domain, then the social domain, and the religious domain, and so on. Okay, you just divide them, religious domain, and so on. And in every part, ultimately what is happening, there are certain institutions which are taking birth. If we'll talk about polity, there are a couple of institutions coming. What do I mean by institutions? Such as in polity, state itself is an institution. So you have to understand कि how did this institution take birth, ठीक है? वो कैसे लेता है? अगर आप बोलते हैं कि ऐसे एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं और स्टेट आ जाता है, तो I think that is not the right way. चंद्रगुप्त मौर्य या कोई भी एक इंसान हिस्ट्री में इतना पावरफुल नहीं हो सकता है कि he or she can establish the institution. Of course, it is the society which brings the institution, which is the circumstances bring institution. So we have to see it with respect to institution. Economy, that can be also divided into many institutions. ठीक है? Institution मतलब कोई organization नहीं, कोई जैसे caste को भी आप कहाँ रखेंगे? It's a kind of social institution. Varna is a social institution. So when you say patriarchy, that's also an institution. ठीक है? So in every domain we can find certain institutions, and you need to understand all those institutions. And if you have really done it in a pretty well manner, I think your concept is really sound. And you always try to understand them together. Why together? Because ultimately each change is related to others. They all are interconnected. They are not happening separately. When you say the political consolidation is happening, that is very much related to economy. When economic consolidation is happening, that's related to society also. The historians like Romela Thapar, they have been correcting the birth of state on the with respect to the lineage. Sorry, birth of state with respect to lineage. वो कहते हैं state का जन्म भी कहाँ से शुरू होता है? Family से शुरू होता है, ठीक है? So that's the reason, because of what you have to actually understand all these connections. And if you have really done it in a pretty good manner, in that case, of course, your understanding will be better, and any kind of questions which are being asked, you'll be able to deal with this. And when it comes to developing these understanding, of course, in paper 1, there are a couple of other things which are also playing very important role, such as historiography, because when you have been covering such a larger period, you are understanding the birth of all these institutions, तो वहाँ पे हिस्टोरियंस के रोल बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि वही हमें समझाते हैं कि भाई ये क्या था, कैसे था. बिकॉज वी आर नो वन टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि भाई हम कहने के लायक नहीं है कि ये हुआ, या मैं आपको कोई कंक्लूजन अपनी तरफ से नहीं दे सकता हूँ, या आप खुद अपनी तरफ से नहीं दे सकते, क्योंकि ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हिस्ट्री में कंक्लूजन क्या होता है. आप में से बहुत लोगों को ये बताया जाता है कि कंक्लूजन लिखना है, ठीक है? कंक्लूजन मतलब ये भी हो सकता है कि आपको आंसर कैसे खत्म करना है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? बट कंक्लूजन मतलब इफ यू हैव बीन लाइक दिस क्वेश्चन इज वेरी कमिंग टू मी वेरी फ्रीक्वेंटली, टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है? इफ द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग इन दिस वे, टू व्हाट एक्सटेंट, द स्टूडेंट्स आर गेटिंग वेरी कंफ्यूज कि नाउ हाउ टू कंक्लूड दिस आंसर, मतलब इन व्हाट डिग्री. तो आपको डिग्री थोड़ी ना लिखना है कि 75% आई एक्सेप्ट एंड 25% आई डिसएग्री विद. Any such kind of conclusion may not take place in history. It's very different subject, and that's why you have to deal with with this particular aspect, right? So that's another thing. And apart from historiography and sources, there's one more thing that you have to keep in mind is the continuity and changes. So when you're really developing or understanding in this part, so you have to focus on these things कि आप उसको एक chronology में समझें कि एक period के बाद दूसरे period में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें बदल रही है और क्या चीज़ें पिछले period से retain करती है या बदल जाती है, और अगर कुछ बदलाव है तो there must be some reasons behind it. That's it. So it's very simple. So try to focus more on concepts rather than catching the minimal events which are happening, very less important events which are happening. कोई event हम मुझे paper 1 में इतना interesting या इतना important लगता नहीं है. Rather always institutions, the broader changes, the continuity changes, these are most important thing. Not the events are very important. So focus on that. But when it comes to paper 2, in paper 2 the requirements are slightly different, right? So let us talk about paper 2. I must tell you that paper 2 as compared to paper 1 is really vast. I at least feel paper 2 little vast.
पेपर 2 वास्ट क्यों है? पेपर 2 वास्ट इसलिए है क्योंकि पेपर 2 में इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. In paper 2 you can really find the event based questions. Let's say when it comes to paper 2, so first of all I can say the event based questions are being asked. Now what do I mean by event? Let's say non-cooperation movement. It is one event and a question may be asked on this. 1919 reform is there. It's an event for me. Questions may be asked on this. ठीक है. तो इस तरीके से event based questions आते हैं. जब भी event based question आएगा तो इसका मतलब syllabus का थोड़ा ज़्यादा thorough study आपको चाहिए. You can't leave the things. ठीक है. But there also you can identify certain topics. ठीक है. You can identify topics. Now, some examples. When you talk about the constitutional development in India, there are many acts which got passed. 1773 से कहानी शुरू होती है and that goes up to 1947, the Indian Independence Act. ठीक है. क्या सारे एक्ट से क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं आते हैं. ठीक है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 1909, 1919 and 1935. The questions are being asked from these acts only. Let's say there are many governor generals. Were the questions being asked from all the governor generals? नहीं. आपको आइडेंटिफाई करना, सब नहीं पढ़ना यार, क्योंकि अगर हम सब कुछ पढ़ने लगे, मुझे पता है मॉडर्न इंडिया ख़त्म करने में हमें 2-3 साल लग जाएंगे, ठीक है. और हमारे पास ले दे के 1 महीना है मॉडर्न इंडिया ख़त्म करने के लिए. 1 महीना बहुत है, मतलब पढ़ने के लिए पहली बार में 1 महीना, और रिवीजन के लिए तो मुझे लगता है कि पहली दूसरी बार करते तो आपको 10 दिन या 15 दिन मिल भी जाते हैं. एग्ज़ाम के टाइम में कुछ घंटे में रिवाइज करना होता है, ठीक है. और तो प्रॉब्लम्स यही है. तो वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इवेंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. एंड इनफैक्ट हियर ऑल्सो द चेंजेस आर गोइंग ऑन वेरी फ्रिक्वेंटली. देयर आर कपल ऑफ चेंजेस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. आई मस्ट टेल यू that the history itself has gone through a change in last 20-30 years. I don't know to what extent you understand it or not. You must have heard about the subaltern historiography. सुना है, ठीक है. और अभी सबसे डोमिनेंट सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी. और मैं सही कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास प्रॉपर सोर्सेज मिल जाए ना, तो हिस्ट्री की जो है डायरेक्शन, जिसको आप हिंदी में दशा और दिशा कहते हैं, ठीक है, that can change drastically. But we are so unfortunate that as far as the sources are concerned, these are also being controlled by that elite sections of society or the bourgeois section of the society. ठीक है. तो जब इसको खुद ही कंट्रोल वो लोग करते हैं तो it is normally ignoring the like this subaltern sections of the society. But your questions are mostly coming from that direction. आज से अगर 15 साल पहले आप क्वेश्चंस देते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि किसी पेपर में दे आर नॉट आस्किंग अबाउट गांधी. डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन तो गांधी जी पे आना है, ठीक है. मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि गांधी जी महान नहीं है, गांधी जी महान है, लेकिन गांधी जी के साथ दूसरे भी कुछ महान लोग थे, है ना. तो हमें थोड़ा वो अप्रोच चेंज करना है एंड इनफैक्ट identify topics and in fact focus on these kind of changes which are happening in history. And the moment you'll be able to change, you'll be focused on these kind of changes, na, I'm telling you, you'll be able to reach to or you'll be able to minimize the syllabus. Now earlier the way we had been reading about Gandhi, so much study of Gandhi, instead of studying Gandhi, try to gather information on Subhash Chandra Bose, right? Try to gather information on some other subaltern leaders, Ambedkar. So I think Gandhi, Bose and Ambedkar are more important than Mahatma Gandhi in the present scenario. And that's how you can apply this idea to every part of the modern India, and that's how you can identify the important topics. So this is how you can, the way history itself is changing. And in fact, there are some new researches are happening and they have been hunting the new dimensions of the subject. जो पिछले, अच्छा हिस्ट्री में न्यू जब मैं कहता हूँ तो न्यू कहने का मतलब ये नहीं कि पेपर में कुछ आर्टिकल आया तो इसका मतलब वो important हो गया. In history, any event is becoming important only once for past 10 years some important researches are going on. They got well established and then only it is becoming part of the change syllabus. ठीक है. तो ऐसा नहीं होता कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, एक्सकवेशन हुआ कहीं पे, आप झंडा बुलंद कर रहे हैं कि जो है यार इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता. हिस्ट्री में कोई भी रिसर्च जब पहली बार आती है तो वो पब्लिश होती है, वो बहुत जगह जो है स्कॉलरली डिबेट में आती है, फिर उसको लोग जो है एक्सेप्ट करने लगते हैं कि नहीं यार इस टॉपिक में इस जो लॉजिक दिया गया है, जो आर्ग्यूमेंट रखा गया है, इस आर्ग्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंस है. तो दैट एक्चुअली कंज्यूम्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टैब्लिश इटसेल्फ, एंड दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज गोइंग टू you have to understand certain changes which are coming in the history itself, or the understanding of history itself in this particular part, right? In the same way, you must have noticed the world history questions. In world history questions, you can find one thing, कि now there are a couple of dimensions which are earlier not being asked. Now they are becoming important, such as
अरब नेशनलिज्म हो गया, पहले क्वेश्चन पूछते नहीं थे अरब नेशनलिज्म पे, या फिर द डीकोलोनाइजेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बेसिकली, अर्लियर लाइक ओनली सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज, अमेरिका तो पढ़ते हैं भाई हम, ठीक है, लेकिन यार डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट अफ्रीका में भी है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी है, इन सब पार्ट से भी क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू रीड ए होल बुक ऑन दीज टॉपिक, यू कैन कलेक्ट द स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर एंड यू कैन रीड इट, ठीक है, बट द information should be standard. Sometimes you believe that any material which is there on the internet that's standard, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट में इतना कूड़ा है, ठीक है, मतलब काम के मटेरियल से ज़्यादा कूड़ा ज़्यादा है, ये रियलिटी है, ठीक है, बिकॉज पीपल आर राइटिंग एनीथिंग, people are writing anything and it's being published. You can publish your own article also, जाइए बहुत जगह पब्लिश कर सकते हैं, तो थोड़ा वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करना बहुत जरूरी है। तो पेपर 2 में लाइक you have to keep in mind the important topics, and if you are really able to keep like you'll really able to track the important topics in paper 2, and then if you have really done that, after that again here the requirements of the questions are slightly, requirement of the answers are slightly different in paper 2, because since I always used to say that this is here the horizontal study is required. Now what is this horizontal studies? You don't need to connect the one period with the another period the way you had been doing it in paper 1. पेपर 1 में आप फेज वाइज पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप कैसे वर्टिकल स्टडीज करते हैं, ठीक है, आप पेपर 2 में आप ऐसे हॉरिजेंटली पढ़ते हैं, तो चीज़ों को कनेक्ट करने का तरीका थोड़ा दूसरा होना चाहिए। सो ऑलवेज ट्राई टू लिंक even the world history events with the Indian history events, and if you've been doing it this way, and if you have been writing something about world history while writing the answer on let's say Indian history, ठीक है, that definitely that is going to leave a good impression over them. So you have to make such kind of connections in paper 2. In that case your presentation part will be really better, but here you are definitely having lesser scope for shortlisting, as only you have to identify the important topic, and if there are certain changes which are happening, which are there in the historiography itself, okay, so that could be included here. Like in paper 1, like it's not very much limited, and paper 2 I must tell you that little bit facts are really required, okay, whereas the paper 2 their expectations are very different from paper 1. तो paper 2 में थोड़े बहुत facts का input जो आपके आंसर में रखना है, तो मैं यहाँ पे आपसे जरूर कहूँगा कि कुछ important facts मतलब नाम और dates नहीं होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हो सकता है एक न्यूज़पेपर का नाम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके आर्ग्यूमेंट को या आपके स्टेटमेंट को थोड़ा कंसोलिडेट करता है, ठीक है, तो उस तरीके के नाम के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि आपने कुछ न्यूज़पेपर के नाम लिख दिए, किसी हिस्टोरियंस के नाम को कोट कर दिया, ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें थोड़ी हेल्प करती है। तो पेपर 2 में थोड़ा फैक्ट्स आपको देख के रखना है, तो यहाँ पे पेपर 2 में थोड़ा काम लेंदी होता है, पेपर 1 तो बहुत आसान है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट्स एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन, इफ यू आर आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंट एरियाज and then you understand or you slightly follow the changes which are happening in last 20-30 years in history, so in that case you'll be able to definitely minimize the syllabus and focus on those parts, and this syllabus also can be covered in 4.5 months if your approach is right. So that's all about from my side. If you have any specific question you can really ask to me. आपके पास कुछ है अगर specific question तो पूछ सकते हैं। I guess no. How to approach GS, sir? In history, do you have optional? Yes. History optional. Okay. In that case, what problems happen? Normally the people, those who are having history as an optional paper, undoubtedly they do have good information. ठीक है. अच्छा, ये good और bad भी बड़ा subjective चीज़ है, ठीक है. Sometimes in GS you are finding such a question that you have never studied in optional. तो वहाँ पे तो आप बराबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं, जितना जीएस वाले जानते हैं उतना आप भी जानते हैं, बट देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री यू डू पोजेस और यू डू हैव बेटर इन्फॉर्मेशन। जब आपके पास बहुत बेटर इन्फॉर्मेशन होता है तो आपको अपने स्किल्स दिखाने नहीं होते हैं, वहाँ पे थोड़ा उसको लेमन अप्रोच रखना होता है, क्योंकि अगर आपने 2 क्वेश्चंस में बहुत अच्छा अप्रोच शो कर दिया कि मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, तो आपके जो बाकी के क्वेश्चंस जब एग्जामिन होंगे तो they'll try to keep in mind that this person does have a good understanding of the subject, so even in rest of the question they'll expect the same sort of understanding. Write the answers without showing any skills such as historiography and the name of historians, ठीक है, इतना कुछ नहीं जाना है, simplistic presentation. In general studies you can go for some conclusions also if it is required, you can go for way forward as well, so these kind of things are expected, like you can go for these kind of things, but in optional you have to be very cautious while writing the answers. तो थोड़ा जो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है, लाइक यू हैव टू कीप द सेंस ऑफ हिस्ट्री
इन जनरल स्टडीज यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग मतलब रिलेवेंट टू सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, बट वहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, एक बार जीएस में भी और एकदम पूछे जाते हैं, बिल्कुल, अप्रोच थोड़ा अलग रखना है दोनों का, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी स्पेशलाइजेशन शो मत करिए, बस इतना बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यस, नॉट रियली, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यू कांट यूज इट। सर अप्रोच फॉर मैथ Approach for map, no approach for map is required here, ठीक है। Now there are a couple of things, like I don't know why you people are complicating it. There are a couple of things you understand since beginning. Don't try to attempt all the 20. Like if you are thinking since beginning कि यार I'll prepare this particular question in such a way that I can attempt all the 20 sites, that's a misconception, utopian idea है, ठीक है। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? 15 to 17 sites. And I'm telling you that you just cover all the sites that have been asked in last 10 years, you'll be able to correct 15 to 17 sites correctly, ठीक है। This is the first thing. The second thing, this is also a misconception that UPSC has been following or is giving the location in a very scientific manner. They are not giving the locations in a very scientific manner. अगर आपका साइट उसके आसपास कोई भी आप साइट आइडेंटिफाई करते हैं, अब आसपास का मतलब यार थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आसपास का मतलब अगर 100 से 150 किलोमीटर के रेंज में आपका भी साइट है, वही साइट है पूछ रहे हैं वो, और अगर नहीं भी है तो भी उसमें आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इतना पैनिक मत करिए उसके लिए। तो दो चीज़ें हैं, आइडेंटिफाई द साइट एंड एनी साइट विच इज लोकेटेड इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन राइट द नेम एंड यू कैन गिव द डिस्क्रिप्शन। लेट्स से इफ यू नो अबाउट द नेम ऑफ 2-3 sites of the same feature or same phenomena, in that case write the name of all 3 sites and give the description of one site by writing the name कि I'm giving the description of this site only. So this is how you target only 15 to 17 questions. और जो यूटोपियन चीज़ें हैं, मतलब आप साल्वेशन ही सीधा ढूंढने लगोगे तो नहीं चलेगा उधर, ठीक है। तो पहली चीज़ तो वो ध्यान रखनी। दूसरा, फोकस ऑन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज वन पार्ट विच इज बीइंग इग्नोर्ड बाय एवरीवन। फॉर आइडेंटिफाइंग साइट यू आर जस्ट गेटिंग half marks, ठीक है, and for giving the right description you have been getting how many marks? 2 marks. तो focus on that. People are not focusing on that part. उसमें आप प्रॉपर कंटेंट रखिए अपने पास, एंड देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू नीड टू रिक्वायर, you actually require, such as the person who has excavated the site, the present day the present day location, if you remember the district, ठीक है, if any river is passing by, then the importance of that particular site. And the fourth, that's very important, if this site remain relevant for many periods, ठीक है। अगर वो साइट जो है मान लीजिए पैलियोलिथिक में भी है, मेसोलिथिक में भी है, नियोलिथिक में भी है, उसने पैलियोलिथिक पूछा है, बट आप जरूर बताइए उसको कि अरे ये साइट नियोलिथिक तक रहा था, तो वो अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। क्योंकि पेपर 1 में मैंने कहा ना, क्रोनोलॉजी या फिर जो है कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है, तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस उनके होते हैं। अगर आपने ऐसे इतने जो है पॉइंट्स दे दिए, मोस्टली उसमें 2.5 मिल जाता है। मतलब इसमें से अगर आप 1-2 इन्फॉर्मेशन मिस भी करते तब भी आपको 2.5 मिलेगा उसमें, अगर आपने आइडेंटिफाई प्रॉपरली किया है। तो साल्वेशन मत ढूंढिए उसमें, ठीक है। 15 to 17 साइट्स शुड बी टारगेट। 2-3 साइट्स हमेशा ऐसे पूछेंगे वो जो हमारे बियॉन्ड आर लिमिट, दे विल बी डेफिनेटली बियॉन्ड आर लिमिट। डोंट पैनिक फॉर दीज काइंड ऑफ, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? यस, कैन यू प्रेडिक्ट द पोर्शंस इन हिस्ट्री देखिए, ऑप्शनल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से लिंक नहीं होते हैं, पर आप उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अल्टीमेटली थीम्स तो वही है ना, दैट थीम्स आर वेरी सिमिलर, ठीक है। सो दे आर चेंजिंग द लैंग्वेज बट द थीम इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। सो इफ यू फाइंड दैट यू नो व्हेन इट कम्स टू सोर्सेज, लेट्स से अगर उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पूछ लिया है, लिटरेरी सोर्सेज भी पूछ लिया है, तो थर्ड टाइम जो है डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट द फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड फॉर लास्ट 2 or 3 years, चांसेस आर देयर, ठीक है। समटाइम्स दे आर रिपीटिंग द क्वेश्चन ऑल्सो। सो यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल। द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट यूपीएससी विल प्रिडिक्ट योर फ्यूचर देन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, बट हाँ ये ऐसे आइडियाज कर सकते हैं। या देखो, अल्टीमेटली वी हैव बीन ऑलवेज प्रिपेयरिंग, यू आर नेवर द वे यू हैव डन ग्रेजुएशन इन विच सब्जेक्ट? कहाँ से, किस सब्जेक्ट से है? हिस्ट्री है ना, कौन से कॉलेज से है? एसओएल में 5 क्वेश्चन प्रिडिक्ट करके जाते हो उधर ना? हाँ वही है ना, वहाँ पे 5 भी प्रिडिक्ट करके जाओगे तो लिख दोगे, ठीक है। लेकिन क्या है, इधर यूपीएससी में कम से कम 40 प्रिडिक्ट करके जाने होते हैं, तो इतना फर्क है। प्रिडिक्शन तो यहाँ पे भी होता है, बट वी ऑफ कोर्स प्रिडिक्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस। प्रिडिक्शन हर जगह चलता है, जीएस में भी प्रिडिक्शन चलता है, यू जस्ट प्रिपेयर मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स। पीवाईक्यू से जीएस में करंट अफेयर्स का काफी इनपुट होता है,
करंट अफेयर्स का काफ़ी इनपुट होता है, तो आप बिल्कुल कर। जीएस में अगर आप नहीं करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। जीएस में बिल्कुल प्रेडिक्शन होता है, और वो प्रेडिक्शंस अगर आपने इफ़ यू हैव रियली गॉन फॉर ए प्रॉपर एनालिसिस, लाइक योर प्रेडिक्शन विल बी वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो, एंड मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स विल फाइंड दैट दिस इज गोइंग टू वर्क। एनी मोर क्वेश्चंस? यस, गो अहेड। हाँ, नॉट रियली। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इंजीनियर्स थे, आए 6 महीने में क्लियर करके चले गए, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा एग्जाम्पल्स, ये मेरे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, सिंस आई ऑल्सो बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट, सेम डिसिप्लिन। मैंने भी पूरे जीवन हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है। मैं भी बड़ा चाहता हूँ यार हिस्ट्री वाले बच्चे आए और क्लियर करके जाए, बट इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट जब नॉन हिस्ट्री वाले बच्चे आते हैं और क्लियर करके चले जाते हैं, हिस्ट्री वाले नहीं करते हैं। मतलब दैट परसेंटेज इज वेरी लेस, ठीक है। आइडियली स्पीकिंग दोज हु हैव स्टडीड हिस्ट्री इन देयर ग्रेजुएशन, दे शुड स्कोर गुड। ये तो होना चाहिए, बड़ा आयरनी है, नहीं हो रहा है ऐसा। Why? Because the approach is very different. As just now I was telling him that you throughout the graduation what you have done, you have been just focusing on 5 questions. अच्छा, 5 questions भी कैसे थे? वो बड़े questions होते हैं। Like for every question you need to write the answer in 6 pages, 7 pages, 8 pages, ठीक है? So that kind of answers you had been writing. The moment you jump into UPSC, the whole approach is being changed. And they never focus on that understanding, chronological understanding. They always focus on what? Like one theme, second theme, third theme. So they have just covered 5, 6 themes, and they are writing very good, and they are getting the CGPA of 8, 8.1, 8.2 also. Okay? This kind of CGPA. But you understand the minor dimensions of history. So when you are starting afresh, of course you can do it. वक्त उतना ही लगेगा, वो भी ग्रेजुएशन वाले भी आके पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो वो अप्रोच आपके लिए इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू हैव गॉन थ्रू द सब्जेक्ट फॉर 3 years एंड देन इन दैट केस यू आर इन अ वेरी कन्वीनियंट सिचुएशन। यस, इफ दे हैव दोज हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन विथ हिस्ट्री एंड दे हैव रियली कैच द रियल रिक्वायरमेंट, इन दैट केस अनडाउटेडली दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड। और कुछ बच्चे हैं जो अच्छा करते हैं, ठीक है, जैसे चंद्र ज्योति थी, लाइक सी इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट सी गॉट 28 रैंक्स, ही वाज फ्रॉम स्टीफेंस हिस्ट्री। या फिर वो थे विक्रम ग्रेवाल थे, ठीक है, उनको देखा था मैंने, उनका अप्रोच लेकिन थोड़ा दूसरा रखा उन लोगों ने, तो उन लोग सक्सेसफुल भी हुए। तो ऐसा कुछ नहीं कि दैट बैकग्राउंड इज एक्चुअली गेटिंग एनी चेंज। यू हैव टू गिव 4.5 months, max to max 6 months with one revision and some writing, subject will be done. So it's not required. Anything else? Okay, so thank you all. Thank you very much.